Hello everyone, welcome to Kalam IAS, and we are going to start our detailed discussion on the geography section of GS1 Mains 2025. This is also here we are also going to discuss in detail our master strategy, how to write answers in mains. What are the important areas we need to work on? Not just the content, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि लिखना क्या था इसके अंदर, हमें ये भी सीखना है कि लिखते कैसे हैं, हमें ये भी सीखना है कि एग्जामिनेशन में सोचते कैसे हैं, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ओके, एंड हाउ टू एड्रेस दैट डिमांड, ओके. Along with that, we also have to work on how to do space management, how to do time management, how to utilize that space, diagram कहाँ बनाना है, map कहाँ बनाना है, conclude कैसे करना है, introduce कैसे करना है. So that is very important. This year, the weightage of geography was quite good, 100 marks weightage, and so it makes the subject quite important. The questions were dynamic, but approachable, and a few themes were quite interesting and quite common. Few themes were not so common, and let's learn. सीखते हैं कि जो बहुत ही फेमस टॉपिक है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, उनको किस तरह से एड्रेस करना है, और जो बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस हैं, सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से बॉडी लिखना है, किस तरह से कंक्लूड करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सारे के सारे सवाल वो नहीं होने वाले जो हमें घर से प्रिपेयर करके गए हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट, लेट्स स्टार्ट with the session. Now I have a clear indication. I want to say that this video is going to be boring. Okay, मैं starting में बता रहा हूँ. So you need a lot of patience because this video is boring but certainly productive. Okay, it is definitely, if you watch this video till end, I guarantee you that by the end of this video you will have a different approach of answer writing, you will have a lot of confidence, and you will learn कि लिखते कैसे हैं, एग्जामिनेशन में सोचते कैसे हैं. It will change your approach towards mains examination. We are going to discuss not just answers, सिर्फ आंसर्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सवाल को अप्रोच कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है. ओके, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, क्या सिर्फ क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, एलैबोरेट यही कीवर्ड्स होते हैं, या फिर और भी क्वेश्चंस और कीवर्ड्स जो हमें देखने होते हैं. लेट्स स्टार्ट. नाउ you have to watch this video till end. It will definitely transform your answer writing skills. As we have discussed this in face-to-face evaluation also with all of you. We have discussed that if we practice this approach, it will definitely certainly improve your answer writing skills. Okay, how to watch this video for maximum benefit? The video is going to be long. The video is not going to have a lot of pictures. So how to get the maximum benefit out of it is follow question wise approach. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक साथ नहीं देखना है, पूरा एक बार में नहीं देखना है. ह्यूमन ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 45 मिनट्स. ओके, आप क्वेश्चन वाइज अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1. एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, आप उसको पेशेंटली सुनिए. ओके, ब्रेनस्टॉर्म जो हो रहा है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए and write it down. Pause the video, write it down. आपको ये वीडियो 4 phases में देखना है, 5 phases में देखना है, it's your wish. If you want to watch 1 question at a time, then write it. 2 questions at a time, then write it. 3 questions at a time, then write it. It's your discretion, but I'll suggest that to get the maximum benefit, follow 1 question approach. पहले आप सवाल का डिस्कशन सुनिए, इसमें क्या लिखना था वो हम डिस्कस करेंगे साथ में. हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था. यू पॉज द वीडियो, आप उसके बाद जाइए 7 मिनट के अंदर या 11 मिनट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम वर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, आप वो आंसर लिखिए. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच ऑफ मेंस आंसर राइटिंग आफ्टर दिस वीडियो. ओके, सिट विद अ पेन एंड पेपर. ओके, डोंट वॉच दिस वीडियो पैसिवली, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए. इस वीडियो को पेन एंड पेपर के साथ कुछ भी स्क्रब करिए. हम यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू एडिशंस देखने वाले हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं, मैप्स देखने वाले हैं. अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली एवरीथिंग विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इज इंपॉर्टेंट. आप उसको नोट डाउन करिए, डेफिनेटली आपको काम आएगा कहीं ना कहीं, 100%. ओके,
to make strategy notes, not to copy content. Content is not our focus today, okay? Content is fine. अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कंटेंट का तो ध्यान रखूंगा, डिमांड तो हम एड्रेस कर ही देंगे, बट दैट इज नॉट द एम. आवर एम is to develop the art of answer writing. Okay, focus on strategy, not just content. Observe how the introduction is framed, how brainstorming is done. इस पे ध्यान देना. I'll keep on focusing on that point again and again. Note keywords and phrases used for scoring marks. Okay, understand space management on answer sheet. I'm going to tell कि पहले पेज पे क्या लिखना था. इफ इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, हमको 2 पेज मिलेंगे. 15 मार्कर है, 3 पेज मिलेंगे. हम ये काम करेंगे. फिर मार्क्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर देयर. हाईलाइट कीवर्ड्स, मॉडल्स, फ्रेमवर्क फॉर ईच क्वेश्चन. देन यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Okay, let's start. Let's not waste our time. Let's start quickly. This is the first question. The question reads, how are climate change and sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples. How are climate change and sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples. Okay. Normally हमारा दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से काम करता है, हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से स्मॉल आइलैंड नेशंस के एग्जिस्टेंस पे कैसे खतरा आ रहा है. ओके, नॉर्मली 95% ऑफ द टाइम्स the human brain is going to see these two words, small island nation, examples. The greatest mistake we'll do is we'll start writing impact of climate change on the existence of small island nations. Okay, we'll start writing impacts of sea level rise on the existence of small island nations, but that is the catch. यहीं पे गड़बड़ होती है. We ignore this part, how part. Okay, there is a catch over here. How? If we translate this word in Hindi, it is going to read कैसे climate change and sea level rise इनके affect करता है existence of small island nations. कैसे? Okay, how? Isn't it? That person, examiner could have used the word discuss, but they have used the term how. Isn't it? They could have used the term elaborate, okay, but they use the term how. That means we have to explain the mechanism, we have to explain the process कि इस तरह से करता है. Isn't it? If we understood this, our 50% work is done. Okay, चलिए. First rule in the examination center or right when you are writing mains question is understanding the core demand. Okay, first rule. कोई भी रूल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई डायग्राम, कोई फूल वूल पत्तियां लगाना, कोई ऐसे एरो एंड स्पोक्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग द राइट डिमांड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ गुड प्रेजेंटेशन, गुड हैंड राइटिंग. फर्स्ट रूल इज डिमांड. First, this word should ring in your brain all the time when you are writing a mains answer. Demand of the question. Okay, if you have clearly understood what the question is asking, then half the work is already done, like we discussed. Okay, what is the core demand of the question? Focus on the word how. Okay, the question is asking the mechanism and process by which climate change and sea level rise are threatening the very existence of island nation. It is not just asking for impacts but cause effect relationship. Okay, अगर आप ये समझ गए हैं कि ये impact नहीं पूछ रहा है, okay, वो mechanism पूछ रहा है. How climate change, how sea level rise are affecting the existence of small island nations. Okay, let's see. Another thing which is very important to address is that the examiner has used the word and. That means there are two separate words. Climate change, how climate change. Let's see once again. How climate change and how sea level rise are affecting the very existence of many island nations. How should my brain work? In the examination hall, it is a 10 marker question.
150 words. I know that. Okay. So what I'll do, I have these two pages. I have these two pages with me. Over here I have question. Okay. And the examiner has asked how climate change and sea level rise. That means one is climate change, and one is and what is the core demand is small island nations. How climate change and sea level rise are affecting the existence of small island nation. How? Fine. So I'll introduce. First I'll introduce. Then my first demand is going to come. Climate change affecting existence of small island nations. Okay. I'll write 1, 2, 3, 4. Okay. Then it's your space management. I'll come to page number 2. Then sea level rise affecting existence of small island nations. 1, 2, 3, 4. I have some space left. Always remember, my friends, whenever they have not asked solutions, they have not asked solutions from me, from us, but the question is a problem-based question. Especially when it comes to disaster management, when it comes to geography, when it comes to environment, economy. When the question is problem-based, we should give some solutions before ending our answer. If you want to include it in the conclusion, आप कर सकते हैं. आप conclusion के अंदर mitigation and adaptation वगैरह जो बताना चाहे बता सकते हैं. Do not end your answer with very generic concepts like global cooperation is needed for protecting small island nations like this. No. The question is problem-based question. The question is problem-based question. Will give practical solutions which are practical, जो दुनिया में हो रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस किया जा रहा है. ओके. आइडियल बातें नहीं, ग्लोबल कॉपरेशन इज नीडेड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ओके. नो समराइज्ड कंक्लूजन, नो आइडियल कंक्लूजन. Practical solution with optimistic and futuristic ideas, okay, which are very practical. Okay. Solution based conclusion. Whether it's Arctic amplification, coral bleaching, or wetland destruction, or Ramsar Convention, biodiversity, whenever this kind of question is there, deforestation and sea level rise, land degradation, we must know some practical practices which are going on throughout the world. उनमें से हमें कुछ पिक करना है, एक या दो आइडिया एक्चुअल में देना है. काइंड ऑफ केस स्टडी जो हम ऑप्शनल में करते हैं, वैसा काम हमको यहाँ पे करना है, सो दैट एग्जामिनर को ऐसा लगेगा द कैंडिडेट इज नॉट जस्ट टेकिंग कंक्लूजन फॉर ग्रांटेड. वो पूरे आंसर को एक फॉर्मेट में, फ्लो अच्छा है, पूरा का पूरा आंसर एक ऑर्डर्ड एक फैशन में है. देन आई यूटिलाइज दिस स्पेस around 20% to 25% of the space, not 25%, but 20% of the second page for conclusion for solution based. So I have written a relevant introduction. My first heading, how climate change is impacting the existence of small island nation. Then my second page, how sea level rise is affecting the existence of small island nations. Then solution based conclusion. My entire answer is complete. Okay. This will be our broad structure. This is called my space management. Okay. This is called my space management. अब इसमें भी एक इनोवेशन कर सकते हैं, इसमें भी एक इनोवेशन कर सकते हैं. हाउ? आई टेल यू. अ स्मार्ट स्टूडेंट वो क्या करेगा, यहां पे एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना देगा. ओके. अ वर्ल्ड मैप. राइट. And will mention some island nations which are facing some, for example, Fiji, Tuvalu, Kiribati, Cuba, Bangladesh, some coastal islands are sinking, Indonesia and Mauritius, and we'll go to Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean. Around 5 to 6 examples. It's very quick. Okay. Now see the overall presentation of this answer. It has a world map. Both the demands are
इक्वली एड्रेस्ड। अब हमने इसमें क्या किया है, मैंने जो दोनों डिमांड्स थी उनको इक्वल वेटेज दिया है। ऐसा नहीं किया कि सी लेवल राइज में मैंने 7 पॉइंट लिख दिए एंड क्लाइमेट चेंज में 2 ही पॉइंट लिखे हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज में 8 पॉइंट लिख दिए हैं बट सी लेवल राइज में 2 ही पॉइंट लिखे हैं। ओके, द सेकंड मिस्टेक विच पीपल डू इज दैट, एंड दैट इज अ वेरी जनरल मिस्टेक, यहां लिख देंगे एक ही डिमांड, दे वोंट सेग्रीगेट, यहां लिख देंगे climate change and sea level rise and they'll use the word impact on small island nations, another major mistake. Okay, अब ये गलती क्यों है, because यहां मैं एग्जामिनर को ये बोल रहा हूं that I have written, जो मुझे आता था मैंने लिख दिया, now you have to segregate कि climate change वाला पॉइंट कौन सा है और sea level rise वाला पॉइंट कौन सा है. Okay, that is the blunder I'm going to make, and 98%, 95, more than 95% of the students are going to do this mistake. Okay, हमें ये काम नहीं करना है, बहुत आइडियल वर्क नहीं है ये, बहुत आइडियल वर्क नहीं है, बहुत स्मार्ट दिमाग भी नहीं चाहिए इसके लिए. what I want to suggest is कि आप सवाल सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं. अगर आपने ये देख लिया कि यार इसमें 2 डिमांड है, इसके अंदर 2 डिमांड है, एक कॉमन थीम है, I have to use my 2 pages accordingly. Okay, understood. अब देखते हैं इसके अंदर लिखना क्या था. Okay, separate the 2 phenomena. The question explicitly wants climate change. How climate change? How? Do not forget how climate change. पैटर्न्स लाइक क्या आता है क्लाइमेट चेंज के अंदर, टेम्परेचर, रेनफॉल, स्टॉर्म्स, ओशन वार्मिंग अफेक्टिंग द सर्वाइवल, रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड ऑफ आइलैंड नेशंस. एक काम हो गया. दूसरा, हाउ राइजिंग लेवल फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, थर्मल एक्सपेंशन डायरेक्टली थ्रेटन्स लैंड एरिया, फ्रेश वाटर, एग्रीकल्चर एंड हैबिटेबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड नेशंस. ओके, हाउ टू लिंक टू एग्जिस्टेंस? The answer must clearly show that these processes are not minor inconveniences but are threatening physical, ecological and socio-economic survival of these nations. See how smartly we are going to cover all these demands. Okay, how to structure, ये कैसे structure करना है, introduce करना है, define the phenomena and set context about vulnerability of island nations. Okay, see friends, a question like climate change, sea level rise, Arctic amplification, biodiversity, इन पे जब भी कोई क्वेश्चन आता है, so these are very important themes. I will suggest you that you must have a pre-prepared report of IPCC or any other organization which is relevant to that, and write that report, because let me tell you what it is going to do. First of all, your introduction is going to be crisp, interesting, and more importantly it will set the tone of your answer. आपकी बॉडी का टोन सेट कर देगा वो. Okay, and it will show the gravity of the situation. For example, if I mention for sea level rise is not a very आइसोलेटेड टॉपिक जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सी लेवल राइज पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है, क्लाउड बर्स्ट पे आ ही सकता है, लैंडस्लाइड्स पे आ ही सकता है, अर्थक्वेक पे आ सकता है, वोल्केनिज्म पे आ सकता है. सो आई मस्ट नो सम डेटा. फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर्ड the data like according to IPCC assessment report 6, the sea level has the global sea level has increased by 21 centimeters since 1900. So what I'm doing over here is 21 centimeter since 1900, 21 centimeters since 1900. I am showing the gravity of the situation कि problem बहुत बड़ी है. Okay, and मैं नहीं बोल रहा हूँ, IPCC की assessment report बोल रही है. Okay, so when I am going to write some points in my answer, जब मैं अपने आंसर में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, so it is going to, my introduction is going to complement these points कि यार हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम तो है, एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम तो है, क्योंकि 21 सेंटीमीटर तो बढ़ ही गया है. तो अब क्या है कि अगर मालदीव्स में which is 90% of the Maldives is just 1 meter above sea level, तो 21 सेंटीमीटर बढ़ गया है, तो it is going to create a lot of problem. A lot of islands in the Micronesia, Polynesia are just 1 to 1.5 meter above sea level. So
अगर 21 सेंटीमीटर बढ़ गया है and it is expected to increase by 50 centimeter by the end of 2050, so it is going to create a lot of problems for these island nations. I hope you understood what I'm trying to say. Okay. Then climate change, how it is affecting. Then इसमें climate change में हम क्या करेंगे? Now think, let's think. Now the question comes to how to think about certain things. Okay. For example, climate change. How climate change is affecting anything. How climate change is affecting anything. कुछ भी अगर affect हो रहा है तो climate change से कैसे हो रहा है, क्या आता है climate change के अंदर. So how my brain should work, whether climate change is affecting small island nations, temperate zone countries, boreal forest ecosystem, rainforest, how climate change is affecting rainforest, how climate change is affecting corals. ये कुछ भी हो तो जब climate change आएगा तो सोचना कैसे है. Let's see. Climate change की वजह से क्या हो रहा है. First of all, the global average temperature is rising. Okay. Then positive feedback loop. Okay, temperature is going to increase. So the cryosphere part, the frozen part, the permafrost is going to melt. Okay. Albedo is going to reduce. More heat absorption. More melting. Again, temperature is going to rise. Okay. So it is leading to one mechanism is supporting another mechanism. Positive feedback loop. Okay. So sea level rise is also going to increase. Okay. Then extreme weather events, cyclones, floods, droughts, storms, dust storms, these are going to increase. इनकी frequency increase हो जाएगी. We can see that again we are discussing why the frequency of tropical cyclones in the Arabian Sea is increasing. Reason is being climate change. Okay. Then on the global level, El Nino, La Nina, weakening of rainfall, getting disturbed, leading to frequent droughts and floods. We can see in India also the southwest monsoon, the mechanism is becoming more and more unpredictable. This time the rainfall came in the June itself, early June itself, before 15 days before the ideal time. It was the report of Indian Meteorological Department. Okay. Then tropical diseases, vector-borne diseases, their frequency is going to increase, right? और क्या होता है climate change की वजह से? The temperate regions are going to have experience warmer temperature. Warmer temperature अगर वो experience करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? The rabi crops, the wheat producing regions, the grasslands like the prairies and the steppes of Eurasia and the prairies of North America, they are going to get impacted, leading to food security shortages and all a lot of things. Okay, this is the broad structure जो कि मैं सोच सकता हूँ. इसमें और भी points आप brainstorm कर सकते हैं. Okay, but for writing a 15 marker question, not just 10 marker, 15 marker question लिखने के लिए पर्याप्त enough dimensions है. इनमें से कुछ point हम निकाल सकते हैं, जैसे कि
अब हमारा क्वेश्चन का डिमांड क्या है? हमारा क्वेश्चन का डिमांड है स्मॉल आइलैंड नेशंस। हमारा जो एपी सेंटर है, हमारा कोर एरिया, वो है स्मॉल आइलैंड नेशंस। ओके, चलिए, उनके क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, उनको कैसे इंपैक्ट कर रहा है उनका एग्जिस्टेंस। ठीक है, वन पॉइंट आई कैन राइट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। Extreme weather events, certainly the frequency when the temperature is going to increase, the sea surface temperature is going to rise. Sea surface temperature क्या होता है? ओशियन का टॉप लेयर का temperature is going to rise, is going to provide conducive conditions for the formation of tropical cyclone. तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर बेसिकली स्टॉर्म्स, वो एक अपने आप में तबाही है. So when they are going to come over an island nation, it is going to destroy the economy, it is going to destroy their livelihood, habitat, cost, economy, everything. Okay, तो उनका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया है. ओके, चलिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? उसके बाद हम यहाँ पे सी लेवल राइज का नाम नहीं लेंगे, बिकॉज सी लेवल राइज अपने आप में एक डिमांड है क्वेश्चन में. ओके, देन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, द रेनफॉल पैटर्न इज गोइंग टू गेट impacted, unpredictability of rainfall leading to frequent droughts and floods in the island nations. Best example is Kiribati, best example is Tuvalu, जहां पे ड्रॉट्स हैं, वहां पे पीने के लिए पानी नहीं होता है, and sometimes the area floods. Okay. Another thing is tropical diseases, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है. ये यहाँ पे स्मॉल आइलैंड नेशंस, बिकॉज लॉट ऑफ आइलैंड नेशंस आर देयर इन द ट्रॉपिकल रीजन, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू गिव बूस्ट टू tropical diseases, vector borne diseases, and it is going to impact the existence of these island nations. They don't have that much of power. Okay. Another thing which I'm going to increase is that average temperature rise, okay, is leading to coral bleaching. Small island nations are coastal economies. Small island nations have coral reefs. A lot of small island nations in Micronesia, Polynesia, in Indian Ocean region also, and in the Caribbean Sea region also have coral reefs, and they are the centers of fishing. Okay, their livelihood is dependent on coral reefs, and if the climate change is going to happen due to sea level rise and temperature rise, the ecosystem of coral reefs is going to die, और वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा उनके लाइवलीहुड पे, उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पे इट इज गोइंग टू इंपैक्ट. ओके, सो यस, इट इज गोइंग टू इंपैक्ट. सो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, मैं यहां से पिक कर लूंगा, एंड आई एम गोइंग टू प्रूव दिस इज हाउ. अभी हमें ये तो हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, अब हमें देखना है कि हाउ, कैसे कर रहा है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं. Climate change affecting the very existence of island nations. ये फर्स्ट पेज यूज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पेज. ओके, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स डिस्ट्रॉय होम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल लैंड्स. ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हाउ मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं कि जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स, ये इंक्रीज हो जाती है, विच इज लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ homes, infrastructure, agricultural lands. Okay, for example, cyclone Harold devastated Vanuatu and Fiji, destroying over 20,000 homes and crops, leaving communities food insecure. अगर आपको यहाँ पे साइक्लोन का नाम नहीं पता है, not a big deal, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हरिकेन्स इन अटलांटिक ओशन, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन रीजन. ओके, इंपैक्टिंग आइलैंड नेशन का नाम ले दीजिए, आप मॉरिशस का नाम ले दीजिए, आप फिजी, तुवालू का नाम ले दीजिए, किसी भी आइलैंड का नाम ले दीजिए, बिकॉज विच आर देयर इन द ट्रॉपिकल रीजन. ओके, बिकॉज दे आर गेटिंग इंपैक्टेड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. पॉइंट नंबर 1 आई हैव रिटन, ओशन वार्मिंग एंड कोरल ब्लीचिंग. ओके, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, वी डिस्कस्ड, कॉज coral bleaching, threatening the fisheries that form the backbone of island economies. How? Sea surface temperature rise होता है, उससे coral bleaching होती है, उससे fisheries which are the backbone of island nation वो destroy होती है.
isn't it? We know the very famous fact, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, that globally coral reefs acquire only 0.25% of the ocean region, 0.25%, okay, or of the ocean region, and but massively, like they are they host around 20%, 1/5 of the global biodiversity. Lot of fishes. For example, the Great Barrier Reef and Pacific small island developing states have experienced massive coral die-offs, reducing fishery availability and threatening livelihood. Okay, isn't it? Coral bleaching का example है, obviously tropical regions में every island nation, आप इंडोनेशिया का, फिलीपींस का एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया का अंडमान निकोबार का एग्जांपल ले सकते हैं, सब जगह कोरल ब्लीचिंग हो रही है, मालदीव्स का नाम ले सकते हैं. ओके, ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स एंड ड्रॉट्स. वी डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज का एक मेजर आउटकम क्या है कि ग्लोबल फिनोमेना ही चेंज हो गया है ना, रेनफॉल का पैटर्न प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं. ओके, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स, फ्रीक्वेंट फ्लड्स. Erratic rainfall leads to freshwater scarcity, impacting drinking water, agriculture and sanitation. How part is addressed? कैसे? By climate change की वजह से rainfall pattern बहुत erratic हो गया है, cannot be predicted, leading to freshwater scarcity. Existence पे खतरा है, freshwater ही नहीं रहेगा तो existence कैसे रहेगा? Okay, impacting drinking water, agriculture and sanitation. Example: Kiribati faces seasonal droughts that jeopardize freshwater access for its 1,20,000 population. You don't have to mention the population. Okay. Socio-economic vulnerability. Loss of agriculture, fisheries and tourism revenues diminishes economic resilience, forcing communities to migrate or depend on aid. Okay. When the climate change is going to happen, उनकी livelihood पे खतरा होगा, their agriculture, their coastal economy, then it is going to lead to push migration, forced migration, climate refugees, push migration from islands to mainland. Okay, directly having an connection with their existence altogether. Maldives का example दे सकते हैं. Then you can mention the Jakarta, which is the fastest sinking city in the world. Then we can mention around 20 to 25% of the Maldives is underwater. We can mention a lot of islands of Bangladesh are leading to submergence due to sea level rise, which is leading to migration towards mainland, towards Dhaka. Okay, a lot of islands like Fiji, Tuvalu are shifting towards Australia, Papua New Guinea, isn't it? So this is how we can mention push migration factor. Okay, what have I done? How part? How climate change? Island nations. 2, 3, 4. Page 1 is done. This is a lot of content. Obviously, you understand how we can summarize it in the simple language. Sea level rise. देखिए, second page has come. Second page. Sea level rise affecting the very existence of small island nations. First thing when we hear about sea level rise, what comes in our mind is that lack of availability of land. जब पानी जमीन की तरफ आ जाएगा, and small island nations or simple island nations like any island nation, if they have a lot, they are littoral states, they are surrounded by water, so from all the sides the water is going to cover it, so obviously the land area is going to reduce. The first thing which comes in our mind, पहली चीज दिमाग में आती है. तो सी लेवल राइज से क्या हो रहा है? सी लेवल राइज से सबमर्जेंस ऑफ लैंड हो रहा है. सबमर्जेंस ऑफ लैंड होगा तो प्रेशर ऑन द लैंड इज गोइंग टू इंक्रीज. डिमांड सप्लाई टाइप का मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं. ओके, अर्लियर 100 people were living in 100 square kilometer area. Now population is going to increase, obviously. Now 120 people are living in 80 square kilometer area. So it is going to increase the pressure on the land, more intensive agriculture, more deforestation, again climate change and forced migration and all that effect. Okay, first thing is land submergence and coastal erosion. Many islands have an average elevation of less than 2 meters. Okay, ये important point है. You note it down that many island, you can write this down, many island nations, around majority of the island nations have an average elevation of less than 2 meters. They are just 2 meters above sea level. So if 1 meter of sea level is going to rise, 50%, like majority of their area is going to submerge. Okay,
have an average elevation of less than 2 meters above sea level, making them highly susceptible to inundation, okay, or pressure on the land or submergence, or all these points we can write. Example के लिए मैं तुवालू और मालदीव का नाम लिख सकता हूँ, already experiencing regular flooding and leading to loss of habitable land. Coastal, these are island nations, are coastal economy based economy. They are depending on coastal tourism, they are dependent on fisheries, coastal economy, okay. अगर वही डूब जाएगा, their livelihood is going to get impacted. Second point, जब समंदर का पानी अंदर आएगा, for example, when the sea level is going to rise, for example, it is a high tide time, spring tides hai, okay, spring tide hai, high tide hai, the salt water is going to enter inside the land area, okay, it enters inside the land area. उससे क्या होता है, जो fresh water ponds हैं, river है, lake है जो island के पास है, उसमें salt water intrusion हो जाता है. जब salt water intrusion हो जाएगा, so that area, that fresh water resource is going to be it is going to be create a scarcity of fresh water, okay. So it is going to lead to impact on the agriculture also. उनका drinking supply कैसे होगा पानी का, isn't it? Rising sea push salt water into freshwater aquifers and soil, affecting the drinking water and agriculture, okay. Every point we are addressing how, we are addressing the mechanism, okay. सिर्फ impact नहीं बता रहे हैं कि पहले ये होगा, उससे ये होगा, उससे existence पे खतरा आएगा. समझ रहे हो बात को? In Kiribati, salt water intrusion has made a large area unsuitable for crop cultivation, increasing flood, food insecurity, okay, existence. Third, displacement and loss of cultural identity, okay. जब forced migration होगा, तो it is going to loss of culture. Submergence of forces, climate induced migration, eroding cultural heritage and traditional ways of life. Obviously, the tribes of island nation, they which have their unique identity, unique language, unique cultural traits, unique habits. अगर वो उनको forced migration होगा वहां से, तो उनको it is going to impact their cultural existence, okay, their cultural identity. It is going to, erosion of their cultural heritage. See, the government of Tuvalu is planning to relocate strategies for its population due to long-term threats, sea level rise threats. Now write down this point. आप इस point को लिखिए. All the examples which we are writing over here. See my friends, अगर आपको आज नहीं तो कल या तो GS3 में या GS1 में ये points की जरूरत फिर से पड़ने वाली है. This is called value addition. Okay, this is called value addition. कुछ भी पढ़ा हुआ कभी भी याद आ सकता है और वो आपको बहुत काम आ सकता है. आप इनको लिखते रहिए, verify करिए और points add करिए. Sea level rise and climate change is something like which will definitely is going to reappear somewhere. If not directly, you can use this value addition indirectly in your essay, in your ethics paper, in your GS2, in your IR paper, international relation. You should be smart enough to use this data. In GS3, definitely, if there is a question on climate change and environment section, disaster management, you can mention these points. Okay, forced migration पे question आ जाता है, तो आप इन points को use कर सकते हैं. Okay, okay, you must know, आपको बस ये art सीखना है कि मुझे इस information को how to apply this at various places, okay, smartly. That is the game you have to understand. If you understand the game, you'll become a player, okay. Ecosystem collapse, देखिए keyword कितना अच्छा है. If you write this ecosystem collapse, it is going to make your answer very impactful, a keyword, okay. Sea level rise damages mangroves, wetlands and coral reefs, which protects islands from storms and sustain biodiversity. Obviously, we know, we study in environment and ecology also that coral reefs, mangroves, coastal biodiversity, ये क्या होते हैं? These are shock absorbers. Okay, जब भी कोई सुनामी वेव्स आती है या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, तो ऐसा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और उनकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं. उससे क्या होता है? कोस्ट पे कम इम्पैक्ट पड़ता है, कोस्टल इरोजन कम होता है, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहती है. दे आर काइंड ऑफ अ बैरियर, दे आर काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करता है.
okay, as a protection from these storms. Okay. In Maldives, declining reef health reduces natural cause protection, making island more vulnerable to storms. Okay, ये hazard vulnerability बढ़ा देता है, उसकी vulnerability को बढ़ा देता है. For example, in future, if there is a cyclone, more devastation is going to happen if there are no mangroves, if there are no coral reefs. Okay. Again, 1, 2, 3, 4. Second page done. First page done. First demand done. Introduced. पहली climate change and how it is affecting the existence. दूसरा sea level rise, how it is affecting the existence. मेरा काम हो गया. अब आगे चलते हैं. Conclusion. Conclusion. What did we discuss? हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन देना है. और सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन कैसे आएगा? व्हाट डिड वी डिस्कस? आइडियल नहीं देना है और समराइज नहीं करना है. ओके, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड फंड ट्रांसफर, बिकॉज द एग्जामिनर आल्सो नोज कितने टाइम से फंड ट्रांसफर की बात हो रही है, पर प्रॉपर फंड ट्रांसफर तो आइडियल ट्रांसफर तो हो ही नहीं पा रहा है. सो वी हैव टू गिव रियल टाइम, रियल लाइफ सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल, अर्जेंट मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बायोरॉक टेक्नोलॉजी फॉर कोरल रिस्टोरेशन. ओके, क्योंकि वो तो हैंड टू हैंड किया जा सकता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा फंड की नीड नहीं है, बहुत ग्लोबल कोऑपरेशन की भी नीड नहीं है, which might not happen. ग्लोबल एक पूरा ग्लोबल कम्युनिटी एक टेबल पे एग्री करे ना करे. ओके, बट देयर लाइफ इज एट स्टेक. द स्मॉल आइलैंड नेशंस, देयर लाइफ इज एट स्टेक. तो कैसे कर सकते हैं? मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बायोरॉक टेक्नोलॉजी फॉर कोरल रिस्टोरेशन and adaptive infrastructure like floating islands of Maldives and early warning system for disaster management can lead to resilient strategies which are essential to prevent the disappearance of entire nations. Okay, introduced properly, addressed both the demands, understood the core aspect, that is how. Okay, now let's see the question once again. How are climate change, sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples. This part done, this part is done, this part is done, and this part is also done. Okay, demand addressed, all demands are addressed, mechanism part addressed, examples addressed. Now your duty is pause the video right now. You understood कि 2 पेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है. आप आंसर लिखिए, then restart the video and jump on to the next question, or you can have 2 questions at a time. It's your wish. Now let's start with the question number 2. Okay, I hope you must have written first question, and it's your wish. You can start with the, you can write 2 questions at a time as we discussed. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज एंड हाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स. राइट, अगेन 10 मार्कर क्वेश्चन, 150 वर्ड्स, 2 पेजेस. ओके, हाउ टू यूटिलाइज इट? I can certainly understand, मैं इतना बिल्कुल certainly समझ सकता हूं कि इसके अंदर जो फर्स्ट है, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, ये फर्स्ट डिमांड है, और दूसरा हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, दिस इज द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. वी कैन certainly come to this conclusion. अब मुझे first thing comes first. Okay, first thing. Okay, this is how my 2 pages are going to look like. Okay, मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि I have a question, what are non-farm primary activities and how are they associated with the physiographic features of the India. Okay, now how do I have to utilize this page? This what are non-farm primary activities, ये मैं पहले पेज का 50% पार्ट यूज करूंगा इसके अंदर.
second page में obviously how are these non-farm primary activities are associated with the physiographic features of India. This is the second major demand, but this is the main demand. It requires more focus. Okay, so यहाँ से how are relevant, how they are related to non-farm primary activities, physiographic features. Okay, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हम मेंशन कर सकते हैं. साथ ही में यहां पे आई हैव टू मेक अ मैप ऑफ इंडिया, a small map of India. Okay, this is how my page is going to look like, and then conclusion, relevance of these non-farm primary activities. Conclusion में relevance. Okay, this is how my 2 pages are going to look like. This mechanism is working in my brain, in my head, that how the 2 pages will be utilized. Understand my friends, बहुत ध्यान से सुनना. पहला चीज है डिमांड. अगर यहीं पे मिस्टेक हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, which we discussed till now. Second thing is space management. Third is justice with each demand. Okay, स्पेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं ये पूरा पेज लिखने के बाद मुझे पता लगता है that I had to give more space to the second main demand, गेम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता. You cannot cut it, you don't have extra space, this is the only space you have. This is going to be a disaster. Second thing, जो डिमांड जितनी इंपॉर्टेंट है उसे उतना वेटेज देना, उसके साथ जस्टिस करना, that is another important thing. Okay, understanding the demand. Okay, now let's come to the question. What are non-farm primary activities? How is the part we have to focus. The examiner, the question demands, how are these non-farm primary activities associated with, related with the physiographic features of the country, physiographic features in India. What are physiographic features of India? The mountains, the deserts, the plains, plateau, coastal areas, forest, northeast, islands. How are these non-farm primary activities are associated with this? Another thing, 10 mark का question है, ज्यादा scope नहीं है, तो what we should do is, what I'll do is, every physiographic features जो हमारे भारत के अंदर है, for example desert we have, plains we have, desert, plains, plateau, mountain, forest, coast, island, right? सबसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे मुझे एक एक नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है. सी हाउ, कैसे, इट रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन. One aspect is most of the students which are going to do is they are just going to write animal husbandry in this part, fishery, coastal areas, dry fruit production, western Himalayas, bamboo, northeast, but they are not going to give explanation, geographical explanation. What are the physiographic features which is actually giving importance to that particular non-farm primary activity? That is very important. If we address how part, कि salt production western Rajasthan and Gujarat run of Kutch में क्यों support कर रहा है? Because evaporation is more than precipitation, leads to capillary effect and deposition of salt on the surface. Okay, Sambar Lake and all these things. How geography, physiography, Chota Nagpur Plateau, Carboniferous period, Gondwana times, Gondwana rock system is supporting minerals. Physiographic feature, वो mineral और कहीं नहीं मिल रहा है. That non-farm primary activity is associated with that part. Bamboo production, northeast, isn't it? Jackfruit production, western Ghats and rainforest region of western Ghats. Okay, physiography is associated. Okay, let's move on. What is the core demand of the question? First,
It's simple enough. What are, define and explain. The question has two parts. One is subpart, one is subpart, one is major part. Okay. यहां आपको क्या करना है, ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं करनी है, सिंपली डिफाइन करना है व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज. सेकंड वाले में रिलेशनशिप दिखाना है. ओके. रिलेशनशिप कैसा दिखाना है, हमें प्रूव करना है कि this particular non-farm primary activity is associated with this particular physiographic feature because it has some characteristics like soil, climate, temperature, humidity, which is supporting this non-farm primary activity. Getting my point? Okay. Now the question comes how to think. Question comes how to think. How to think. How to think, we already did the thinking exercise in climate change. We all did the same exercise in sea level rise. अब हमें यहाँ पे देखना, जब whenever the question is going to come on the Indian geography, for example, it is like the tribes of, the question is on tribes, the question is on soil, the question is on types of forest, the question is on different physiographic features, then how to think? You need help. Who is going to do this help? कौन करेगा ये आपकी मदद? Yourself, you. But how? Okay. Whenever the question is on Indian geography, I make a map of India. Okay, I do make a map of India. When I make a map of India, let's example. Okay, so when I make a map of India, I have some islands. I have Andaman and Nicobar. I can see Jammu and Kashmir. I can see Northeast. I can see Rajasthan, Gujarat, and entire country. When I look at this, I get ideas. When I know there are plains, when I know there is Chota Nagpur Plateau, when I know there is Northeast forest, rainforest, hilly region. Okay, when I see Jammu and Kashmir, I get some ideas. When I see desert, I get some ideas. For example, we have Araulis, we have non-metallic minerals, okay, like zinc, lead, etc. Western Rajasthan, we have camel rearing. Then salt production. Okay, we have Sambar Lake, Loon Sagar. Then in the Jammu and Kashmir part, I know we have a walnut, almond. I go to Ladakh, I have pashmina, goat, horticulture, apple in Himachal Pradesh. Okay, animal husbandry, and inland fishing. In Indo-Gangetic plains. Poultry and all you can put. Okay. In the Northeast, if I'm going to go, I'll see what? Bamboo. What? Forestry. Sericulture. What else? Beekeeping. Honey production. Chota Nagpur Plateau, Carboniferous period, I can write coal, iron ore, bauxite. Coastal areas and islands, I can write marine fisheries, coconut production.
so many activities, so many non-farm primary activities we have, and along with that we also have the geographical explanation for them, that why this particular non-farm primary activity is associated with this physiography, right? So when I do this exercise I get a lot of ideas. देखो दोस्तों, अगर ये मैप मैंने नहीं बनाया होता तो शायद मुझे in examination the situation is so critical. We all have discussed in our F2F sessions also that those 6.5 minutes, that 7 minutes जो हमें मिलते हैं लिखने के लिए, उसमें हमारा दिमाग इतना सब कुछ नहीं सोच पाता. वी हैव टू मेक इट एबल, हमें उसे प्रैक्टिस से बनाना पड़ता है. बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू टू find new dimensions, diverse points. If you think logically also, it is a 10 marker question. 10 नंबर का सवाल है. अगर मेरे पास 10-15 पॉइंट्स तो होंगे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे जो 6-7 फिजियोग्राफिक फीचर्स है इंडिया के, जिसमें माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, फॉरेस्ट है, आइलैंड है, isn't it? वहां से मैं एक नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी भी दिखाऊं, लिखूं, मेंशन करूं और उसको एक्सप्लेन करूं हाउ इट इज रिलेटेड विद फिजियोग्राफिक फीचर, मेरा काम हो जाएगा. ओके, बट नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि अगर यही क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता तब भी हम कितने सारे पॉइंट जनरेट कर सकते थे और एक्सप्लेन कर सकते थे कि हाउ इट इज एसोसिएटेड विद फिजियोग्राफिक फीचर. आई होप यू अंडरस्टूड द टेक्निक. ओके, इन ये यहां पे हम जैक फ्रूट, ओके, Uttarakhand we have a lot of mushrooms and a lot of medicinal plants which are sold in the pharma industry. Okay, they are non-farm primary activities. They are grown in the forest. They are not grown. They are wildly found in the forested area, hilly forested areas. Okay, and they are non-farm primary activities. They are sold in the market by the local tribes and all. Okay, so these are the non-farm primary activities. This is how you are going to mention. आपको सारी मेंशन नहीं करनी है. आपको एग्जामिनेशन में हर फिजियोग्राफी फीचर से आप एक एक्टिविटी मेंशन कर दीजिए जिसको आप एक्सप्लेन करने वाले हैं. ओके, उसको आप मेंशन कर दीजिए. एंड द मोर यू मेंशन इज द मोर बेटर इट इज. नो प्रॉब्लम. चलिए, ओके, ये मेरा स्ट्रक्चर रहेगा. देन आई विल गो नेक्स्ट. This is how my answer is going to look. Non-farm primary activity, simple definition, refers to those economic undertakings, mining undertakings that directly use natural resources. जो natural resources like minerals, forest produce, salt, coconut, fish, natural fruits, isn't it? They are which are gifted by the nature resources without involving crop farming, जिसके लिए मुझे लैंड को कल्टीवेट नहीं करना पड़ता, सीड्स को सो नहीं करना पड़ता. नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, हनी which is gifted by, which does not require cropping, they are non farm primary activities. जहां रॉ मटेरियल तो डायरेक्टली मिल रहा है, बट मुझे क्रॉपिंग नहीं करनी पड़ रही है. ओके, मैप ऑफ इंडिया डन. Now comes the main demand. After half page is over, now second half of the first page, I will make the heading relationship with physiographic features. Okay, mining, Chota Nagpur plateau I'm going to mention. Okay, I'll mention geological formation, plateaus influence mineral deposits. For example, Chota Nagpur plateau carboniferous period हम mention कर सकते हैं, गोंडवाना रॉक सिस्टम mention कर सकते हैं. फिर हम सकते हैं कोल, आयरन, माइका, उड़ीसा के अंदर बॉक्साइट, कोलार माइंस के अंदर कर्नाटका गोल्ड. Then second, forestry, because the question is about non-farm primary activity, so I am going to write through non-farm primary activity कि non-farm primary activity. फिर उसके बाद में पहले एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका फिजियोग्राफिक रिलेशन प्रूव करेंगे. ओके, dense forest forms in the mountains and high rainfall zones like western slopes of western ghats, northeast, okay, Himalayas and western ghats, timber, medicinal plants, northeast के अंदर bamboo and rattan. इस तरह की एक्टिविटीज हमने मेंशन कर दी. फॉर एग्जांपल, फिर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी फिशिंग. कोस्टल प्लेन्स, एस्चुरीज, रिवर डेल्टास प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर मरीन फिशरीज एज वेल एज इनलैंड फिशरीज. केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल मरीन फिशरीज, सुंदरबंस, श्रिम्प फार्मिंग आई मेंशन्ड. देन आई विल राइट एनिमल हस्बेंड्री एंड पेस्टोरलिज्म. इसके डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट एंड टेरेन. जैसे एरिड और सेमी एरिड एरियाज के अंदर देयर आर ग्रासलैंड्स. ओके, सो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर कैमल रियरिंग इज देयर. गोट रियरिंग, राजस्थान एंड गुजरात.
कोल्ड डेजर्ट के अंदर द पश्मीना गोट हैज is suitable to the cold climate of that region. Okay, pashmina goat in Ladakh. Horticulture and plantation crops, physiography, climate, soil type dictate soil suitability. Kashmir Valley के अंदर हमने dry fruit, walnuts and almond production. Then Lakshadweep coastal coconut, rainforest of Western Ghats, jackfruits and tropical fruits. Okay, वहां पे मिलते हैं. Mushrooms वगैरह हम mention कर सकते हैं. In Kodai Canal. Salt production and others. Low-lying, flat, arid and coastal plains are salt pans. You can mention a lot of salt producing lakes of Rajasthan also, run of Kutch also. Evaporation is more than precipitation, and the dry climate is more creates more conducive condition for salt production in that part of the physiography of the country. Riverbeds and plateau edges, sand mining. Forested northeast Chhattisgarh, like bamboo, medicinal plants, and all this. What I did, nothing. हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब इंडियन ज्योग्राफी का सवाल आए तो हमें किस तरह से सोचना है, मैप बनाना है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है. यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन था नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी एंड हाउ दे आर एसोसिएटेड विद फिजियोग्राफिक फीचर्स. सो हाउ पार्ट हैज टू बी एड्रेस्ड. हमें एक्सप्लेन करना है कि how this non-farm primary activities is associated with the physiography of that part. Second thing, after demand, space utilization and doing justice with all the demands, now it is coming to organization of these points. How should I organize my points? Should I write physiography or should I write non-farm primary activities and then require explanation? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है how are these non-farm primary activities are associated with the physiographic features of the country. So हमें non-farm primary activities के prism से लिखना है, उसके through लिखना है. For example, I'll write non-farm primary activity first, then I'll give the physiographic feature explanation. Non-farm primary activity explanation. I hope you understood. What I did, I covered one part from the desert physiography, from mountain physiography, from plains, from plateaus, Chota Nagpur plateau, coastal and islands area, northeast forest area, all Western Ghats forest area covered. Okay, एक नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी हर जगह से उठाई और उसका फिजियोग्राफी एक्सप्लेनेशन प्रूव कर दिया. माय डिमांड इज मेट. ओके, मैंने इंडिया का मैप बना दिया है, उसमें कुछ मेंशन एक्टिविटीज मेंशन कर दीजिए. ओके, कंक्लूजन रेलेवेंस. इन नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज का रेलेवेंस क्या है हमें, दिस इज हाउ वी शुड कंक्लूड. Okay, so recognizing this relationship is crucial for regional planning, sustainable resource use and livelihood. Non-farm primary activities दोस्तों, इसका relevance अगर हम चाहें तो इसका हम regional disparity को bridge करने के लिए कर सकते हैं. SDG 10 reduced inequalities, region specific employment generation. It will act as a barrier protection against forced migration from rural to urban areas. Regional planning, the principle of horizontal unity. Okay, then region specific. Employment. Okay, again act as a disguised unemployment. Solution to disguise unemployment in agriculture. Okay, increase per capita income, boost exports. Okay, one district, one product. Okay, right.
We can link with MSME industries, micro, small and medium enterprise industries, isn't it? SDG 10, reduced inequalities. How many things you can connect? Okay, employment, regional parity, equal distribution of resources, regional planning. Okay, problem, per capita income of farmers, Ashok Dayawala panel we can mention, isn't it? And a lot of other things also, sustainable development, parallel horizontal unity of planning principle, isn't it? Regional planning, everything we can cover. अगर इसी नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज का रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस करना हो तो हम 15 मार्कर का क्वेश्चन होगा उसको भी लिख देंगे. ओके, अब हमारा क्या लर्निंग है? हमारा लर्निंग ये है कि whenever the question is coming on employment, whenever the question is coming on agriculture, okay, that is GS3, GS1 and 3, okay, as well as questions on poverty, okay, equal distribution of resources, we have to mention one of the way forward as boost to non-farm प्राइमरी एक्टिविटीज. और अभी हमारे पास वैल्यू एडिशन करने के लिए फ्यू एग्जांपल्स भी हैं अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफी ऑफ द कंट्री, एंड यू कैन मेंशन सम ऑफ द बैकवर्ड एरियाज लाइक आइलैंड नेशंस, नॉर्थ ईस्ट, हाउ नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज कैन हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस और सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट और रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट. दिस इज हाउ वी हैव टू कनेक्ट. एक क्वेश्चन से कितना कुछ सीखने को मिलता है, इसको मैं कहां अप्लाई करूंगा, इसको मैं कहां यूज करूंगा एज अ वैल्यू एडिशन. दिस इज हाउ योर ब्रेन शुड वर्क. तब आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे. ओके, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब आपको क्या करना है? नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. इससे पहले यू हैव टू पॉज द वीडियो and write that question, what are non-farm primary activities and how they are related with the physiographic features of this country. Explain with examples. इसको आपको 2 pages में लिखना है, 7 minutes में लिखना है. When you write it, come to the question number 3. Again, 10 mark, 150 words, 2 pages. When you'll write more and more full length test, आपको समझ में आएगा किस तरह से इसको लिखना था. Okay, now explain briefly the ecological and economic benefits of the solar energy generation in India with suitable examples. We discussed this question in face-to-face evaluation also. Okay, we discussed the structuring also. कैसा structure दिखना चाहिए? How the structure should look like? Okay. यहां पे क्वेश्चन लिखा होगा, हाउ व्हाट एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया. यहां मेरा आंसर होगा, इसके अंदर इंट्रोडक्शन आ जाएगा. ओके, देन आई एम गोइंग टू हैव अ हेडिंग, व्हाट इकोलॉजिकल बेनिफिट्स. ऑन सेकंड पेज देन आई विल राइट पॉइंट 1, 2, 3, 4, देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, जितना अगर यहाँ पे आपको 5 आता है 5 लिखिए. देन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, रेलेवेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन फॉर ग्रेटर गोल ऑफ नेट जीरो और समथिंग, नेट जीरो बाय 2070 लाइक दैट फॉर पंचामृत टारगेट्स एंड ऑल. ओके, दिस इज हाउ माय 2 पेजेस आर गोइंग टू लुक लाइक. अब द क्वेश्चन कम्स ऑन कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है. यहाँ हाउ टू इंट्रोड्यूस. यहां पे मैंने क्या किया, अभी तक क्या एक्सरसाइज किया हमने, मेंटल एक्सरसाइज. डिड आई अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? यस. बिफोर इवन स्टार्टिंग माय आंसर, डू आई हैव अ फ्रेमवर्क फॉर माय 2 pages? यस. स्पेस मैनेजमेंट, यस. सी फ्रेंड्स, why am I repeating this one again and again? You must be thinking कि बार बार एक ही चीज क्यों बोली जा रही है. Because अगर आप इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को यहां तक लिख देंगे, then you will realize that I do not have enough space for my second demand, और आपके मार्क्स कट जाएंगे. Because
Here you will end up writing around 5 to 6 points, and when it will come to economic benefits, आपके पास 2 ही point होंगे, आपको definitely, certainly आपको कम ही marks मिलेंगे, okay? And it shows poor space management skills also, okay? Then you will have conclusion. Third is justice with each demand. Justice with each demand. How to introduce? देखो, recent current affair. देखो, when it comes to solar energy, आपके पास definitely, certainly current affair होगा. Whether it is COP29, whether it is India's data. In this question particularly, before mains 2025, one current affair was very much popular. Was surfacing on the internet in the current affairs files also, that India achieved the 50% target 5 years ahead of its. Ahead of 2030, the Panchamrit target. Second thing, आप कैसे कर सकते हैं? Question क्या बोल रहा है? Ecological and economic benefits of solar energy. तो आप India's potential of 750 gigawatt and 300 plus sunny days ये mention कर सकते हैं. 750 gigawatt we have to memorize, because this is that data which is not going to change. It is the potential of India, 750 gigawatt of solar energy. It is not going to change. Another data is 4 to 7 kilowatt hour per meter square per day. That much of solar energy is received by India geography. So that is our potential. So अगर आप ये दोनों data याद कर लेते हैं, so it is going to show the examiner that you have in-depth understanding, and these numbers actually show the potential of solar energy in India. कितना ज्यादा है? अभी हम 120 gigawatt पे हैं और potential तो 750 gigawatt का है. So that shows that we have a lot of scope in solar energy, right? Let's do a quick brainstorming activity. While we were doing F2F sessions, we came across, हमने ecological benefits में बहुत ही generic points लिख रखे हैं. हमने economic benefits में भी ऐसे points लिख रखे हैं जिसमें economy ही नहीं है, जिसमें economy का कोई relevance ही नहीं है, isn't it? So now we have to write accordingly कि every point जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ, उसका जो relevance है वो directly question की demand को hit करना चाहिए. For example, if I am writing ecological benefits, तो उसमें ecology वाले points आने चाहिए. अब ecology वाला question जब आए, जैसे for example, what are the ecological benefits of biorock technology? What are the ecological benefits of Miyawaki method? What are the ecological benefits of afforestation? What are the ecological benefits of wetland restoration? तो मेरा दिमाग किस तरह से काम करना चाहिए, उसमें क्या क्या ब्रेनस्टॉर्म, किस तरह से कौन सी डायमेंशंस ओपन होनी चाहिए, लेट्स लर्न. ओके, इकोलॉजिकल सब थीम्स एंड इकोनॉमी सब थीम्स. इकोलॉजिकल सब थीम्स, इकोलॉजी में क्या आता है? इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स हैं. ओके, levels of ecology, individual, then individual is there, then there is population, then there is a entire community. Ecosystems, what are different types of ecosystems which are going to come? Wetland ecosystem, the river ecosystem, the forest ecosystem, the desert ecosystem, tree ecosystem, pond ecosystem, mangrove ecosystem, coral ecosystem. Okay, succession, primary succession, secondary succession. For example, if the question comes on forest fires or slash and burn agriculture, then deforestation, for example mining, then it is going to create a succession, क्योंकि पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक बार में क्लियर कर दिया जाएगा. The entire community is going to be impacted. It will lead to secondary succession, right? Biodiversity, hotspots, types, what are genetic biodiversity, ecosystem biodiversity, isn't it? Then threats and conservation, biogeochemical cycle, how it is going to benefit the carbon cycle, the phosphorus cycle, the water cycle, isn't it? Like that. Human ecology, human man environment interaction, pollution, right? Ecosystem services, how this is going to benefit provisioning services, regulating services, cultural services, like that. Then special ecosystem, for example, हमने ये सब grasslands वगैरह biodiversity में mention कर ही दिया. Then environmental policies and governance, this is also part of ecology. For example, the Panchamrit targets, the Environmental Protection Act of 1986, Wildlife Protection Act of 1972. How ये सारी dimensions हैं, इतनी सारी dimensions हैं. For example, इनमें भी हमने बहुत break किया है. We have over here around 25 to 30 dimensions
आई होप इसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी whenever the question is going to come on ecology. Okay, this is how you break the words. It's not always pistol like political, economic, social, technical, सबको उतना ही याद है, but when it comes to individual aspects जब उनको तोड़ने में आते हैं तो हमें brainstorming में points ही नहीं मिलते हैं. Okay, so this is how you think. When the ecology is going to come, when the climate change is going to come, how my brain is going to think, what all dimensions of climate change are there. Okay, what are dimensions of salt sea level rise are there. Okay, इंडियन ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आता है नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज पे, सॉइल्स पे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे, या फिर टाइप्स ऑफ ट्राइब्स कहाँ मिलते हैं, किस तरह से सोचना है, मैप बना के सोचना है, हर इंडिया को ब्रेक कर देना है, हर स्टेट में, हर रीजन में, देन सोचना है कि यहां से क्या निकल सकता है, वहां से क्या निकल सकता है. When it comes to ecological benefits, तो पूरी इकोलॉजी को सब थीम्स को में से कुछ ना कुछ पॉइंट निकालने हैं. बेसिक से इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, बायोकेमिकल साइकिल, ह्यूमन इकोलॉजी, कल्चरल सर्विस, इकोसिस्टम सर्विसेज, स्पेशल इकोसिस्टम्स, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, 100% मिलेगा. आई गारंटी यू. इफ you have studied properly, if you have cleared prelims and you have written, means you know what I'm talking about. Okay, you are directly understanding what I'm talking about. But if you have studied properly, you have done a little bit of answer writing, still you are understanding what I'm trying to say. Now we do not have shortage of dimensions. Dimensions तो भरपूर हैं. अब हमें क्या करना है, सेकंड टास्क इज कि इनमें से कौन सी डायमेंशन मेरे क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से सुटेबल बैठेगा. राइट, तो हमें रेलेवेंट पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट नंबर 1, डाइवर्स पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट नंबर 2, एंड गुड वैल्यू एडिशन. आई विल बी एबल टू प्रूव माई पॉइंट, सब्सटेंशिएट कर पाऊंगा. And it is going to give a lot of good, great presence, appearance, and presentation to my answer, that whatever I am writing is very credible information. Okay. Ecological benefits: reduction in greenhouse gas emission. Okay. So, emission वहां पे जो लैंड, वाटर, एयर हमने जो डिस्कस किया था, उसमें से एयर पोल्यूशन एक हो गया एमिशन. Solar energy produces no carbon dioxide during operation, helping to reduce global warming and air pollution. It definitely सही है. Example: the Bhadla Solar Park, Rajasthan, 2.25 gigawatt reduces millions of tons of CO2. आपको अगर ये information याद भी नहीं है, वैसे आप याद कर सकते हैं. This will definitely help you in substantiating other part of the answers, different answers. But you can write, so Bhadla Solar Power Plant reduces millions of tons of CO2 annually. ठीक है. Reduces dependence on coal. India's coal plants emit 1.1 gigawatt CO2 annually. Write it down. लिख लो, लिख लीजिए इसको. It is a value addition which you can use anywhere, a lot of places, in economy also, in renewable energy also, in environment also, and pollution topic also. Okay, India's CO2 plants, coal plants emit 1.1 gigaton of carbon dioxide annually. Right. Conservation of water resources, land, water, air, different ecosystems. Water आ गया. Water में मैं क्या mention कर सकता हूँ? The thermal power plants which are which uses coal requires a lot of water. How much water? See, 1.25 million liters of water per day. एक 500 megawatt, 500 megawatt coal-based thermal power plants typically requires around 1.25 million liters of water per day. Write it down to support your arguments. अगर आपको कोल के खिलाफ लिखना है, प्रो विंड एनर्जी, प्रो रिन्यूएबल एनर्जी कभी भी लिखना है, ओके, सो दिस यू कैन यूज दिस डेटा टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट कि नहीं, हमारे को वाटर का बहुत बड़ा बेनिफिट है. वी आर बिकमिंग अ वाटर स्केयर्स नेशन. वी नीड, ओके, व्हेन दिस हॉट वाटर थर्मल जो पानी होता है उसको वापस रिलीज किया जाता है, इट एट टाइम्स लीड्स टू थर्मल पॉल्यूशन ऑल्सो, थर्मल पॉल्यूशन वाटर ऑल्सो, गर्म पानी, इम्पैक्टिंग द marine biodiversity. Minimal land degradation and pollution. Rooftop solar and solar parks can be installed on barren land, marginal land, avoiding deforestation and soil erosion. Right? थर्मल या कोल के लिए हमें पहले डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, फिर माइनिंग करनी पड़ेगी, उससे लैंड पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, कितनी सारी चीजें होंगी. राइट. Biodiversity conservation. By reducing reliance on coal-based power, it decreases mining pressure, helping protection of wildlife habitats. Right.
Climate mitigation. Support India's Panchamrit from the last point, policies, environmental policies, वहां से India's COP targets of 500 gigawatt non-fossil fuel capacity by 2030. Okay, stop writing 50%. We already achieved it. हाँ 500 gigawatt लिखिए. Economy sub-themes. Whenever the question is going to come on economy, how am I going to think? First layer of thinking. किसी भी चीज का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछा हो, किसी भी चीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा हो और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो पहले आपको सोचना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कितना हो गया? 4. ओके, इनमें से कोई पॉइंट मिलता है, ठीक है, वेल एंड गुड. नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है. 100% मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लैंड यूटिलाइजेशन मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टार्टअप्स मिलेंगे, स्किल स्टैंड अप इंडिया मिशन मिलेगा आपको. 3 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. डेफिनेटली आपको एग्रीकल्चर में कुछ मिल जाएगा, एमएसएमई में कुछ ना मिल जाएगा, सर्विस सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बैंकिंग सर्विसेज कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिल जाएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, isn't it? उसमें आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिल जाएगा. So 3 dimensions over here, 2 major dimensions over here. 4 plus 3 7, 7 plus 2 9. Budget and fiscal management, taxation, subsidies, fiscal deficit, revenue deficit. Okay, three dimensions over here. I have 12 हो गए, 12 till now. Then we have government schemes and all. Energy security, energy sovereignty. For example, any kind of disruption, global disruption like Russia-Ukraine war or Iran-Israel dispute led to disruption of energy supply of coal and crude oil, making the price, impacting the price volatility, and disruption of energy supply for the country, isn't it? So if we'll rely more on our own solar energy, we'll have energy sovereignty. That means we'll be independent, Atmanirbhar Bharat, right? You can mention it. So 12, 14 points, 14 dimensions I have. Enough to write a 15 marker, enough to write definitely a 10 marker. कितने ही dimensions आप generate कर सकते हैं. Let's see how am I using, कहाँ से मैं use कर सकता हूँ. Okay. Job creation in the land, labor and capital entrepreneurship. I used job creation, that is employment. Solar energy, solar PM, solar Surya Mitra scheme is there, solar mega park scheme is there, PM Kusum Yojana is there. बहुत सारी जो employment देगी लोगों को, semi skilled and skilled labor को employment मिलेगा. Okay. Energy security and diversification. क्या होगा इससे? Dependence कम हो जाएगी imported fossil fuels की, and coal and petroleum stabilizing energy prices and decreasing import bill. I have subsumed 3 to 4 points within this. Okay. Then rural development, primary sector, I can go to agriculture where PM Kusum ke zariye the individual farmers income is going to increase, and reliance on coal is going to reduce, reliance on diesel is going to reduce, and greener crop production, green GDP. आप कितने चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं, but your point of view should be that every point I'm writing is meeting the economic benefits demand properly, right? और हमें पता लगी गया सोचना कैसे है. लैंड से सोचना है, लेबर से सोचना है, कैपिटल से सोचना है, एंटरप्रेन्योरशिप से सोचना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में आप लिखिए ना MSME बेस्ड कॉपरेटिव्स which are going to build socio-economic zones, gift city of the Gujarat, national infrastructure, national investment manufacturing zones, and Andhra Pradesh and all. They are going to produce solar panels. We are going to become more independent, isn't it? Import bill is going to reduce. Current account deficit is going to reduce. Dependence on other countries is going to reduce. Economy. Ecology. Okay. Import, export, balance of payment. वहाँ से हम कुछ point निकाल सकते हैं. Our import bill is going to reduce. The current account deficit is going to reduce, isn't it? Our forex reserves will be utilized for more better, for exchange. Economic policies. Okay. लिखिए production linked incentive scheme. Support fiscal prudence, more sustainable fiscal policy which is going to rationalize the subsidies. Electric subsidy दी जाती है अभी, isn't it? Our subsidies bill is very high, which is going to reduce the subsidy burden.
and the remaining amount can be used for capital expenditure, for infrastructure, for skill development, isn't it? For agriculture extension services, a lot of money that can be used. Then large area of barren, uncultivated, degraded land in Western Rajasthan, in Gujarat, which are not agriculturally conducive. They don't have ideal condition, but they can be made economically viable, productive through solar energy generation. They can be utilized for that, isn't it? So land, labor, capital, entrepreneurship, manufacturing, export, import. I used all these points to generate these dimensions, 7 dimensions. I hope you understood what I'm trying to say. Conclude, broader conclusion. Our goal 2070 net zero, though solar energy, more investment, more focus, and more conducive ecosystem for solar energy will help India to achieve the target of net zero by 2070. बस काम खत्म. वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन हो गया, गोल बेस्ड कंक्लूजन हो गया, ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, सब कुछ है, राइट? चलिए आगे चलते हैं. नाउ आई सजेस्ट यू, अगर आप, बिकॉज पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पॉज करिए वीडियो, हमने जो डिस्कस किया ब्रेनस्टॉर्म करा, आप उसको नोट डाउन करिए, वैलिडेशन करिए, राइट द क्वेश्चन इन 7 minutes, come back whenever you want. Okay. Now again a 10 marker question, 150 words, 2 pages. Okay. What are tsunamis? How? Where? What are the consequences? What are tsunamis? How are they formed? Where are they formed? And what are the consequences? Explained with examples. I have 2 pages, 4 demands. How my brain is going to work? This is very important. What if I got to know that 1.5 pages over, or abhi bhi mera ye demand bacha hua hai, which is quite a major demand, and I have a good content on this. Okay, how will I do justice with this? So this is why first job, demand. How many demands? ठीक है, आप भी एग्जामिनेशन में यही करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे. दिस विल शो यू आई हैव 4 डिमांड्स. देन you already know that I have 2 pages. If we have 3 pages, तो आपका दिमाग उस तरह से काम करना चाहिए. Okay, now I have 2 pages. I have 2 pages. So I have question. What are tsunamis? ठीक है. How are they formed? Where are they formed? And what are consequences? ये question है. Then my introduction is going to come. Okay. Right. Then how part is going to come. Then where part is going to come. Then what are the consequences part are the going to come. And then conclusion. This is a mental image of this structuring of this answer, how space will be utilized in my brain while writing. I have to stop at some point of time because I have limited space. Okay. And when the tsunami is going to come, the question is how and where. The first thing which should come in my mind is the diagram of subduction zone. Okay, the subduction zone. Okay, and then I can show a tsunami wave like this, and I can show the coast like this. This subduction zone is going to create intense earthquake because 80%, 70 to 80% of the tsunamis are the result of huge submarine earthquakes which are near the subduction zones, that is the convergent plate boundaries. Okay, this diagram along with this a small world map. A small world map showing the convergent plate boundary.
अगर मैं ये दिखा दूंगा some island nations and all, then these two diagrams will help in how part and where part. Okay, and these are very small. वर्ल्ड मैप आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप 15 to 20 सेकंड्स में आप वर्ल्ड मैप बनाइए, इसके अंदर लेबलिंग वाला पार्ट भी हो जाना चाहिए। विद इन 30 सेकंड्स लेबल करके आपका काम फिनिश होना चाहिए। ओके, दिस डायग्राम हाउ एंड वेयर, हाउ विल आई डू इट? फर्स्ट डायग्राम ओवर हियर, सेकंड डायग्राम ओवर हियर, ओके, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन। Consequences are going to come. This is how my two pages are going to look like. Okay. चलिए. Introduction. These questions are very simple. उसने पूछा है वाटर सुनामीज की डिफाइन कर दीजिए। कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी, कोई रिसेंट एग्जांपल के थ्रू नहीं करना है, क्योंकि पूछा ही है व्हाट आर सुनामीज। तो the first demand is, the examiner demands we need to define a tsunami. हमें define tsunami को define करना ही है, and we have less space, so let's not waste our time in creating some interesting or some engineered definition. Okay, simply the geographical definition. Tsunamis are series of enormous sea waves caused by sudden displacement of large volume of water due to tectonic or volcanic activity. Unlike normal waves, the wavelength is very long, up to some kilometers, and they travel at a speed causing devastation impact on reaching coastal areas. For example, 2004 tsunami, oceanic tsunami. Whenever there is a definition, never ever leave the definition without example. Mandatory example with definition, हर बार एक एग्जांपल आएगा। चलिए, सुनामी का फॉर्मेशन किससे इंक्लूडेड है? टू मेजर थिंग्स, दैट इज वन इज वॉल्केनिक tectonic activity, earthquake formation, earthquakes, and second is volcano. Okay, these are the two major regions for formation of tsunamis. Okay, अब हम बताएंगे कि सबमरीन अर्थक्वेक्स होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन अराउंड 70 to 80% सुनामीज का सोर्स यही है। देन अकर्स व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स सडनली शिफ्ट अलोंग द ओशनिक फॉल्ट्स डिस्प्लेसिंग वाटर वर्टिकली। ओके, देन एग्जांपल दे दिया। वॉल्केनिक इरप्शन में मुझे पता होना चाहिए कि जब वॉल्केनो होता है, इट क्रिएट्स अ लार्ज इम्पैक्ट, समटाइम्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सबमरीन प्लेट्स, लीडिंग टू disruption of volume of water, large amount of volume of water, creating huge waves which are called tsunamis. Okay, where tsunamis are formed we discussed. First of all, आपको ये डायग्राम तो पहले वाले बनाना ही है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, सबडक्शन जोन, सुनामी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, दूसरा छोटा वर्ल्ड मैप बनाना है, जहां पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन शो सुमात्रा के पास, आई कैन शो द 2004 सुनामी, देन जापान सुनामी ऑफ 2011. Okay, and basically where they are formed globally around the convergent plate boundary. So I can show Pacific Ring of Fire, I can show the Pacific Ring of Fire, because this is the geographical area which is associated with convergent plate boundaries. Here we have continental oceanic convergence and oceanic convergence. Okay, here I can show volcanic islands also, like Philippines, Indonesia islands. Okay, जहाँ पे वोल्केनो की इरप्शन की वजह से भी सुनामी आती है। So this is how I mentioned. Now the third part coming to the second page. Okay, what are the impacts? कितना सब कुछ है लिखने के लिए। Okay, human and social impact, economic impact, environmental impact, यहाँ पे आप लिखिए loss of life and injury, displacement, migration, psychological trauma. Okay, because a lot of deaths, casualties leads to psychological trauma. Loss of cultural heritage, tribes, the tribal population which have unique practices, which are unique languages, unique ethnic practices are disrupted. They are forced migrated. Sometimes they are completely eroded. Okay, for example, the PVTGs of Andaman and Nicobar were significantly impacted by the 2004 tsunami.
Economic impact, definitely infrastructure, livelihood, agriculture, insurance. Okay, more money budget allocation for the reconstruction of the sites, and more fiscal burden. Environmental impact, coastal erosion hoga, coral reef destruction hoga, mangrove destruction hoga, isn't it? So biodiversity loss hoga, a lot of things are we have to write. हमको 5 to 6 points पकड़ने हैं and we have to write, right? Question conclusion, how to conclude this kind of question. Okay, when the question is a disaster, आपको way forward में डालना है disaster based way forward solution. You can mention Sendai framework. You have to mention Sendai framework. If the question is on earthquake, the question is on floods, the question is on earthquakes, landslides, tsunami, cyclone. Okay, so we can mention some mitigation measures, we can mention some adaptation measures, early warning system, isn't it? And Sendai framework, resilient infrastructure, coastal resilience, like that. Okay, associated with disaster management. Okay, early warning systems, public awareness, capacity building, coastal planning are crucial to mitigate their impacts as seen after the establishment of Indian Tsunami Early Warning Center. और आप इनकॉइस को भी मेंशन कर सकते हैं, Hyderabad system, and then you can mention Sendai framework for 2015 to 2030. Pause this video, analyze the question, and write it in 7 minutes. Okay. Now, give a geographical explanation of distribution of offshore oil reserves of the world. It is a 15 marker question, 250 words, 3 pages. How my 3 pages are going to look like? Three pages. Question. First demand. First job is to understand a demand. Geographical explanation of distribution of offshore oil reserves and how it is different from onshore oil reserves. क्या मैं समझ गया? क्वेश्चन की 2 मेजर डिमांड है, मेरे पास 3 पेजेस हैं. What do I have to do? 2 parts. Okay. Now it is requiring global distribution, so it is my duty to make a world map showing the global distribution. Okay. I suggested students in the face-to-face evaluation also कि आपको world map कोशिश करिए कि map आप first page पे ही दिखा दें. Okay, how it is going to impact? First of all, it will improve your overall presentation. Second thing, the examiner doesn't have to turn back again and again if you are talking about the distribution कि हाँ उसने कहाँ लिखा है, कहाँ map बनाया है उसने, उसको पहले ही दिख गया. So the examiner is going to understand that you already know global distribution. Okay. Intro. Okay, ठीक है. Geographical explanation and distribution. My first demand, I will start writing geographical explanation and how they are distributed. 4, 5, 6, 7, 8 points. Distribution as well as my 1.5 pages over. Now, difference between onshore and offshore. Okay, make up line, dividing line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conclude. This is going to be my structure. Okay, a world map. It has map,
equal. What have I done? The 3 rules. डिमांड सही में समझ में आ गई, कितनी डिमांड है, स्पेस यूटिलाइजेशन हो गया, प्लानिंग हो गई है कि 1.5 पेज में फर्स्ट डिमांड एंड सेकंड 1.5 पेज में सेकंड डिमांड. ओके, देन रेलेवेंट इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड मैप showing distribution, the structure is ready. Now how to introduce? In these type of questions always tell about themselves. उस फिनोमिना के बारे में समझा देना. ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स क्या होते हैं ये बता दीजिए आप इंट्रोडक्शन के अंदर. ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स आर सो एंड सो. ओके, नो इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग करने का समय भी नहीं होता है और करिए भी मत. ओके, रिसेंटली सम ऑयल रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द ऑफशोर, नहीं मत करिए, क्योंकि आप सिर्फ उसमें भी एक ही डायमेंशन को कवर करेंगे, isn't it? और मोस्टली वो गलत हो जाता है. इसमें सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल. ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स आर accumulation of petroleum located beneath the ocean floor, continental shelf, continental slope, isn't it? Deep sea basins. Extraction requires specialized drilling platforms and advanced thing. एक दो एग्जांपल हमने पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ मैक्सिको का यहाँ पे दे दिया है. ओके, चलिए फर्स्ट डिमांड पे आ जाता हूँ. वर्ल्ड मैप बनाने. वर्ल्ड मैप बना दिया पहले पेज में. अब मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दे रहा हूँ. क्या इस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रहे होंगे? ओके, सेडिमेंट accumulation in the continental shelf region, okay, in the continental slope region, isn't it? Then historical plate tectonic, एक एग्जांपल दे सकते हैं. प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से सबमर्जेंस हो गया है, इमर्जेंस हो गया है. सो द मरीन डिपॉजिट्स they have emerged, came close to the surface, and deposition led to fossil storage. Then we already know कि fossil fuels sedimentary rocks में ही मिलते हैं. Igneous rocks में तो मिलते भी नहीं है कि because the reason is that when igneous rocks are formed they are very hot and fossils do not survive in those conditions. And then in sedimentary rocks we have strata. So in strata के बीच में fossils store हो जाता है लंबे समय के लिए. So it leads to the fossil fuel creation, isn't it? So offshore और क्या बता सकते हैं हम? Submergence of land. Okay, we can show. Then plate tectonics, movement of land leading to for sediment deposition. Okay, then past marine environment, जो पहले historical geological history के अंदर जो marine environment रहा था, for example coral reefs रहे थे, उस पे जो fisheries रही थी, they die and they settle in the areas of continental shelf and leads to fossil creation. उससे fossil fuel offshore reserves आ जाते हैं. Okay, this is how submerged coast, island and with stored fossils. This is how I have given geographical explanation कि ये सब geographical कारण है offshore oil reserves मिलने के. Okay, now second task is distribution. इसका global distribution कैसे explain करूंगा मैं? World map तो मैंने बनाए ही है, उसमें मैं दिखाऊंगा are concentrated mainly along the continental margins and sedimentary basins formed due to tectonic and sedimentary processes. Okay, Middle East दिखा दूंगा. Okay, for example the world map which I am going to draw, Okay, so this is the world map you can draw, and then you can mention this is the Gulf of Mexico, this is Persian Gulf, Gulf of Khambat over here, Mediterranean region. Okay, this Guinea coast near northern north of South America, the Venezuela region and all. So these are the points 1, 2, 3, 4. Bombay High you can mention. Okay, then you can mention the eastern coast of Africa. Okay, 7. This is how you can mention in the world map. You can also show some regions which are onshore, like this land area of Russia and the Arabic countries, desert part of Arabian
region, Saudi Arabia and Iran and Iraq and all these countries. Okay, so this will be a world map presentation and distribution. Obviously, you have to write about this, like Gulf of Mexico, Guinea Coast, Gulf of Khambat, Persian Gulf, near Strait of Hormuz, and all these things, Mediterranean Sea. You have to mention all these things. Okay. Coming to the second part, what is the difference? How will I? Obviously, this part was quite difficult to answer in the mains examination, but still there are techniques to write the difference. आप अगर आप डोमेन बनाएंगे तो आप सोच पाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, and then you will be able to write about it. For example, first criteria I can make of location. ये कहाँ मिलता है? Continental shelf में मिलता है, ocean floor में मिलता है. वो कहाँ मिलता है? ये surface, land surface में मिलता है. Exploration and technology required. इसके लिए floating techniques, floating machinery is required. तभी तो वो extract कर पाएगा. So advanced machinery is required. So same machinery तो यहाँ use नहीं होगी. यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे conventional drilling and pumping machinery use होगी. Cost of extraction obviously more skilled and more trained, जो कि पानी के अंदर जो मशीनरी उसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड होंगे. More skilled manpower is needed, more money is needed, okay, to extract it, to transport it. यहाँ पे relatively कम पैसा लगेगा. Okay. Environmental risk, यहाँ oil spills हो सकता है, bioaccumulation हो सकता है, magnification हो सकता है, marine food chain disrupt हो सकती है, और उसको कंट्रोल करने के मेजर्स भी easy नहीं हैं. यहाँ लैंड डिग्रेडेशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ये सब होगा. ओके. मेजर लोकेशन आई कैन मेंशन, आई नो लैंड का भी पता है, साइबेरिया पता है, अमेरिका में लिख दीजिए आप, इंडिया में लिख दीजिए असम, राजस्थान. ओके. सऊदी अरेबिया में वी कैन मेंशन. एंड ऑफ शोर का तो हमें पता ही है, नॉर्थ सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन द पर्शियन गल्फ, ऑल दीज मेंशन. प्रोडक्शन शेयर मैक्सिमम किसका ज्यादा होगा? मैक्सिमम ऑन शोर का होगा और मिनिमम ऑफ शोर का होगा. ओके. हाउ टू कंक्लूड? phenomena based questions, concept based question, significance based conclusion. Okay, what is the significance, geographical significance of offshore oil reserves? In these type of questions, you must write that they help in studying the fossil distribution, the rate of submergence of land area, helps in understanding the plate tectonics, the distribution of fossils throughout the world. Okay, what type of fossils are there? Okay. Offshore oil reserves helps geographical significance, understand sedimentary basins formation, plate tectonics, and past marine environment कैसा था. Analysis of subsurface strata, fossils, and organic deposits reveal Earth's geological history, including sea level changes, sedimentary patterns, tectonic evolution. इन सबको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा ही ना ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स. देयर इज ऑलवेज अ लिंकेज विद ज्योग्राफी. ओके. जियोलॉजिकल हिस्ट्री, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न ऑफ सबमर्जेंस, इमर्जेंस, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ग्लोब, प्लेट टेक्टोनिक्स में हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में. इट सपोर्ट्स प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्कर. Your job is to pause the video, write that answer and come back. Okay. How? If you're not writing, there is no point of this discussion. If you're not writing the answer, there is no significance of watching this. Such a long video, you are dedicating that much of time. If you are dedicating that much of time, that means you have to write. And trust me, after these 7 to 8 questions, your perception about answer writing is definitely going to change. Okay. How, again, very important word, how AI and drone technology be effectively used along with GIS and remote sensing techniques in locational and aerial planning. Okay, quite a tricky question, but quite an easy question, quite an approachable question. Okay, आसान भाषा में कैसे AI and drones be effectively used along with GIS and RS, remote sensing
techniques, geographical information system and remote sensing techniques in locational and aerial planning. ये कोर थीम है, लोकेशनल और एरियल प्लानिंग के लिए AI and drones along with GIS and remote sensing किस तरह से यूज कर सकते हैं, how can effectively used for regional and aerial planning. Okay, so my epicenter is regional and aerial planning. मुझे क्या करना है, रीजनल एंड एरियल प्लानिंग के लिए AI प्लस ड्रोन्स प्लस GIS प्लस रिमोट सेंसिंग को यूज करना है रीजनल एंड एरियल प्लानिंग के लिए. अब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स हैं वो देखते हैं. हाउ टू थिंक इन दिस आंसर, हाउ कैन आई राइट दिस आंसर, रीजनल एंड एरियल प्लानिंग. How different regions, what are different regions? Agricultural region, industrial region, mountain region, isn't it? Forest region, coastal region, right? Disaster management and planning के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, isn't it? Population distribution को स्टडी करने के लिए regional planning, urban planning, rural planning, isn't it? Then what else? Island area planning हो गया हमारा, already we have counted. What else we can write? Okay, different regions. Okay, agricultural region, urban planning, how this can be used, hill area planning, forest area planning, island area planning, isn't it? Coastal area planning, disaster management में किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं. Now I hope you understood. Okay, how regional and aerial planning. Okay, so I have to break region, different region, geographical regions, regional planning. Okay, so what are agricultural region? Okay, desert area planning, coastal area planning, hill area planning, disaster management, urban planning, industrial regions, industrial area planning, isn't it? Island, desert area, plains. Okay, forest, why all these are different regions and different planning approach is needed for all these areas and regional planning. Okay, and now I can integrate these are going to become my headings. These are going to become my headings. These are going to become my headings, and I'll support how part I'm going to address, how AI, how drones, how GIS and RS is going to help in agricultural region and planning. फिर मैं लिखूंगा डेजर्ट एरिया प्लानिंग में AI, ड्रोन्स, GIS एंड RS का क्या सिग्निफिकेंस है, कोस्टल में क्या सिग्निफिकेंस है, हिल एरिया प्लानिंग में क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, कोस्टल एरिया प्लानिंग में क्या है, आइलैंड एरिया प्लानिंग में क्या है. ओके, सो व्हाट हैव आई डन? I have broken this word, this term into different regions and aerial planning. और मैं आप बताऊंगा जो हमारा AI है, जो कॉमन ये तो कॉमन एरिया हो, उसको मैंने ब्रेक कर दिया, और अब जो AI जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से हेल्प करेगी, इफेक्टिवली यूज्ड. ओके, दिस इज द की वर्ड इन द क्वेश्चन, कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड. चलिए लिखते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस. ओके, कंबाइंड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है. कंबाइंड फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करेंगे. किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे? AI सपोर्टेड ड्रोन्स, GIS एंड रिमोट सेंसिंग, सबको एक साथ लिख दिया. ओके, सिर्फ AI पे सवाल नहीं है दोस्तों, सिर्फ AI की टेक्निक पे सवाल नहीं है,
सिर्फ एआई के बारे में लिख देना इज नॉट. एआई इज विल यूज द डेटा कलेक्टेड बाय ड्रोन्स, जीआईएस एंड आरएस. फिर वो एआई उसको यूज करेगा. दैट डेटा कैन बी यूज्ड फॉर रीजनल एंड एरियल प्लानिंग. गॉट इट? Are revolutionizing locational and aerial planning. Their integration allows for data-driven decision making, precision mapping, risk assessment, and sustainable resource management across diverse landscapes. Okay, हमने क्या बताया है कि this will help in. Their integration allows for data-driven decision making, more rational decision making, more precise, precision mapping, risk assessment and sustainable resource management across diverse landscape. डिजास्टर का डेटा हम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं उसका हम डेटा जीआईएस से मैप कर सकते हैं. वी कैन डू रिस्क असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ एआई. एग्रीकल्चरल एरिया प्लानिंग के अंदर वी कैन स्टडी द टाइप ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, agriculture pattern, moisture in the soil, and the agroclimatic condition which is suitable for which it will help in showing the suitable crops which are suitable for that. Urban area planning ke andar dividing the functional regions like the commercial region, the sacred region, the administrative region, the residential region, and proper water sanitation, water management, isn't it? उसके अंदर हेल्प कर सकता है. तो एआई कैन बी यूज्ड. अब मैं यही काम करूंगा हर एरिया में. डेजर्ट में क्या करना है? मॉइस्चर कंटेंट, वहां की जो एक्टिविटी है उसको स्टडी करना, सॉइल प्रॉपर्टीज स्टडी करना, मैं ये एआई की मदद से, इन सारी टेक्नोलॉजीज की मदद से करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड. ओके, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्लानिंग, soil and crop management, RS data identify soil types, moisture content and health. AI models predict optimal crop based on soil, climate, water availability वगैरह वगैरह. Drones monitor pest outbreaks, irrigation needs and fertilizer application. कोई rocket science नहीं है. I am writing everything which is there as GS knowledge, nothing else. अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं आया. Urban planning, land use mapping, AI decision support. RS and GIS analyze urban sprawls, road networks, and population density. Drones update high resolution maps for ongoing construction and land encroachment. Outcomes are very productive. Hill area planning, okay. Terrain analysis, okay. बस जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स को यूज करना है. Okay, and we have to integrate how AI can be used. If we close our eyes, we can definitely talk about each and every area. The trick here was to break that word area and regional planning. फिर उसके बाद तो काम आसान है. Okay, then drones, then island area planning के अंदर coastal and marine mapping कर सकता हूँ. Then AI suggest optimal location for housing, tourism, renewable energy. Drones provide real-time monitoring of small islands, coral reefs and all. Okay. Then disaster management and planning, hazard identification, okay, hazard mapping कर सकते हैं हम. RS detects floodplains, cyclone prone areas and earthquake zones. AI prediction of models estimate disaster impacts, population risk and evacuation. How? Through past data, past information. Provide real-time disaster surveillance and relief assessment. Coastal area planning के अंदर we already done, okay. Conclusion. Again, significance based conclusion. The integration of AI, drones, GIS and RS enables high scientific, effective and sustainable locational and aerial planning across agriculture. उसको ये मैंने पूरा समराइज कर दिया है और सिग्निफिकेंस बता दिया है कि this technology ensures optimal resource use, risk mitigation and long-term resilience. Okay. Overall completion of futuristic, optimistic and solution-based conclusion. Pause the video, write the question, 15 marker, 3 pages in 11 minutes and come back. Okay. Next question. What did we do in that question? Demand, addressed, space management, justice with all the demands. हर टॉपिक के बारे में बात होगी.
एंड मल्टीपल डायमेंशनल आउटकम निकल के आ गया. ओके, डिस्कस हाउ changes in shape and size of continent and ocean basin of the planet take place due to tectonic movements of the crustal masses. 15 marker, 250 words, 3 pages. Okay, क्वेश्चन का कोड डिमांड क्या है? बोल रहा है डिस्कस करिए हाउ changes in shape and size of the continent, shape and size of continents and ocean basin of the planet takes place due to tectonic movements of crustal masses. Tectonic movement of crustal masses, जिसमें convergent plate boundary, divergent plate boundary, sedimentation and deposition and transform plate boundary. Okay, इन 3 plate boundaries के बारे में हमें डिस्कशन करना है और बताना है कि due to these plate tectonic movements, how shape and size of the continent is taking place. Definitely we can start from talking about plate tectonics from Mackenzie and Morgan का नाम ले सकते हैं, Parker का नाम ले सकते हैं. Okay, they are mentioned in books like in NCERT. Mackenzie's name is mentioned in plate tectonics. Okay, then we can mention about Pangaea, Penthalassa and Gondwana land, Angara land. Okay, due to convectional cell in the upper mantle asthenosphere. Okay, leading to rupture, which is the driving force, and movement of major plates driven by the convection currents. Okay, so वहाँ पे mention कर सकते हैं driving force, and then we can mention these 3 plate boundaries, and we can substantiate with the data and examples. Like for example, in the divergent plate boundary, the size of the ocean is going to increase. For example, Atlantic Ocean का size बड़ा हो रहा है. The convergent plate boundary where the land is subducting, okay, so the size of the ocean is going to reduce. जिस area में सबसे ज़्यादा convergent plate boundary होगी, that means it is contracting. Okay, तो वहाँ पे क्या होगा? For example, the Indian plate is actually converging in Eurasian plate. Obviously, size, shape of the Indian plate has gone under some changes, isn't it? The oceans like Indian Ocean, it is going to change. The shape of the Indian Ocean is going to change because of the Great African Rift Valley, due to continental divergence. New ocean is being is emerging, and when it is going to rupture, most possibly a new continent is going to come into formation. A new continent will be formed. Okay, so this is how plate tectonics is leading to transformation or changes in the shape and size of ocean and the continents. Okay, if we mention these phenomena in these 3 to 4 subcategories like convergent plate boundary, divergent plate boundary, deposition of sediments, when the sediments are eroded and they are deposited along the coast, and when submergence due to tectonic activity takes place, the shape of the continent is going to change, right? When there will be subduction, the shape of the continent and size of the continent is going to decrease, ocean is going to increase. This way we have to substantiate. देखते हैं इसमें कैसे लिखना है. How to introduce? बस plate tectonics के बारे में mention करिए. The theory of plate tectonics refined by Mackenzie and Parker explains that the Earth's lithosphere is divided into plates, some major plates, some micro plates, minor plates, and they move over semi-fluid asthenosphere. According to their model, horizontal movements of the plates occur due to mantle convection currents of Arthur Holmes. Okay, plates may diverge, converge, or slide past one another, resulting in continuous reshaping of continents and ocean basin. When I write this continuous reshaping of continents and ocean bases, मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी body के लिए tone set कर रहा हूँ. Okay, now the flow is going to be good. Okay. This diagram in like a half page is mandatory in this, because it is going to show each and every minute detail. The convergent plate the divergent plate boundary over here and convergent plate boundary over here. Okay. If we have to do it in a better way, we can mention it like, mid-Atlantic ridge over here,
And we can mention like one example, like this is Nazca plate, South American plate over here. So to give it more value addition and more relevant context, okay. This is subduction zone. This is widening of the ocean, okay. Divergent plate boundary, convergent boundary, subduction zone, like this. We can prove that yes, plate tectonics is leading to some changes in the size, in the shape of ocean and continent, okay. एक प्लेट बाउंड्री लूंगा, एक्सपेंशन ऑफ ओशन बेसिन, वहां पे लिखूंगा मिड ओशन रिजेस प्लेट मूव अपार्ट. It is basically called a constructive plate boundary because new crust is being constructed, which leads to widening of the ocean. उस ocean की size बड़ी हो जाती है, and Atlantic Ocean is the one of the best examples. Okay, the process called sea floor spreading enlarges ocean basin and modifies continental edges. Okay, what am I doing over here? I'm using more and more geographical concepts. I'm writing the more and more geographical keywords and more relevant word. Again and again, I will show that shape and size. Again and again, I will show to the examiner how this phenomena of plate tectonics is impacting the shape and size of the ocean or continent. Okay. Atlantic Ocean is widening due to divergence of North American plate and Eurasian plate. Convergent, mountain building and continental shaping. जब continent की size and shape कैसे change होगी? अगर वहाँ पे mountain बन जाएगा, अगर convergent plate boundary हो गई और Himalayas बन जाएंगे, the shape of the continent has changed. The size of the continent has changed. Okay, Andes बन जाएंगे convergent plate boundaries. Plates collide, causing subduction or continental collision. Subduction zones shrink ocean basin, while continental collision forms mountains. Okay. Examples: Himalayas collision of Indian plate with Eurasian plate, Andes subduction of Nazca plate under South American plate. We can show it in the diagram also. Transform boundary, lateral shifts. Okay, it will change the shape and size of the ocean. Okay, transform plate boundary, obviously not as significant as in the divergent and convergent boundary, but it will definitely transform the shape and size of the ocean and the continent. Sea level changes in continental margins. Tectonic activities के अंदर जो which causes uplift and subsidence of continental margins indirectly modify ocean basin size. Example: Andaman and Nicobar Islands uplift due to Indian Ocean plate interaction. Great Rift Valley, East Africa, continental stretching. Okay, you can mention continental divergence also. यहाँ पे हम African Rift Valley का example दे सकते हैं. Possibility of a new ocean, a new continent altogether. Okay. Then I can show a world map. Okay, and I can show how these plates are moving, and I can mention that the size and shape of different continents. Like I can say, I can write size and shape increasing, okay, decreasing, okay, mountain formation, okay, Himalayas formation, okay, shape of Indian plate, and like this I can show tectonically how it is impacting the shape and size of different continents and oceans. Okay, like Red Sea, Mediterranean Sea, like this. Conclusion: phenomena based question, significance based conclusion. Understood, my friends? Phenomena based question, significance based conclusion. Significance based conclusion. What is the significance of plate tectonics? A lot of it. The processes create mountains, ocean ridges, trenches and rift valleys, continuously modifying Earth's surface and influencing climate, ecology and human geography. You can also add understanding the transformation of shape and size of the continents helps in understanding the geological past of Earth, understanding the distribution of fossils, understanding the pattern of earthquakes, volcanic formation, etc. So more precise geographical studies. This is the significance based conclusion. Now this is how we have discussed all the questions. Now what is your duty is now write all these questions, understand how to, the first priority is understanding the demand, then space utilization in the brain, brainstorming कैसे करते हैं,
सोचते कैसे हैं ज्योग्राफी में, ओके, इकोलॉजी आए तो कैसे सोचना है, इकोनॉमी आए तो कैसे सोचना है, कौन से एस्पेक्ट्स कवर करने हैं क्लाइमेट चेंज में, सी लेवल राइज के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कैसे सोचना है, एंड राइट दीज क्वेश्चंस एंड यूज दिस अप्रोच टू राइट अदर क्वेश्चंस आल्सो. Okay, all the very best. I hope you got some perspective today. It was a lengthy session, but it is, I assure you that if you follow what I say, definitely you're going to see a major transformation in your answer writing skills. And in future also, you'll be able to address surprising questions and easy questions in a more better way. All the very best. Thank you so much.